Infinix ने recently अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया था, Infinix Note 50X 5G, that rides the AI feature wagon just like any other smartphone on the market and comes with military-grade protection, all under rupees 15,000. Hey everyone, my name is Ishan, you're watching NDTV, and I got to use the Infinix Note 50X for a brief period of time, and here's what I think about it. So let's get started. Infinix Note 50X 5G एक मॉडर्न और स्टर्डी डिजाइन के साथ आता है. Its octagonal gem-cut camera module and active halo lighting system give it a unique and distinctive look. ये डिवाइस 3 कलर ऑप्शंस में आता है: green, grey and purple. It comes with MIL-STD 810H certification that on paper makes it quite durable. The Infinix Note 50X 5G features a 6.67-inch HD Plus display with a 120Hz refresh rate. It is powered by the MediaTek Dimensity 7300 Ultimate SoC, ensuring reliable performance for everyday tasks. The phone comes in 2 RAM and storage configurations: 6GB RAM with 128GB storage, priced at Rs 11,499, and 8GB RAM with 128GB storage, which is priced at Rs 12,999. इसमें 5500 mAh की बैटरी दी गई है जो 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कमिंग टू द सॉफ्टवेयर, ये डिवाइस Android 15 पर चलता है विद द XOS स्किन ऑन टॉप. MediaTek Dimensity 7300 Ultimate चिपसेट के साथ डेली टास्क्स जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और लाइट गेमिंग में कोई लैग या इशू नहीं आता. Neither does the smartphone overheat while using for prolonged hours, which is much appreciated. इस स्मार्टफोन में डुअल रेयर कैमरा सेटअप मिलता है विद अ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर एंड एन 8 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर. डेलाइट शॉट्स काफी वाइब्रेंट और डिटेल्ड आते हैं. नाइट मोड इमेजेस यूजेबल हैं लेकिन नॉइज नोटिसेबल है. It can shoot videos at up to 4K 30 FPS, which turn out to be decent. 5500 mAh बैटरी easily एक दिन से ज़्यादा चलती है. 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ही फोन क्विकली चार्ज हो जाता है. Infinix Note 50X 5G एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है जो सॉलिड डिस्प्ले, डिसेंट परफॉर्मेंस और रिलायबल बैटरी लाइफ ऑफर करता है, all at a very competitive price. There are a few compromises such as average night photography, but overall it's a decent contender for users looking for a budget 5G smartphone. That was our detailed review of the Infinix Note 50X 5G. We'll see you in the next review. Until then, stay tuned to NDTV.